Good morning, good afternoon, good evening, good night. Children, viewers, students, wherever you are. In the last lecture, I introduced the first chapter of the book Flamingo. That's the last lesson. Today, I'll be just going word with word, and I'd like you to have a pen and pencil with you, whosoever is listening me, so that you can understand every bit of. Since the first examination that is to be conducted there in the late November or maybe the early December, and all MCQs are expected to be coming over there. So what I wish that you should have the book with you, you should have pen and pencil and note down everything that I speak from this platform here. And what I feel, children, this is the first lesson, of course the last lesson, the meanings, the spellings, the pronunciation, the Hindi, the English, the translation, antonyms, synonyms, adjectives, and formation, everything that I am going to discuss. So, if you really are interested in learning English language as a whole, there is a great chance for you. Not only you will complete the syllabus, but you will also learn English as a language. So here we go, children. The first lesson, of course, the last lesson by Alphonse Daudet. Well, yesterday I had given some details about this man. I need not go it again. So I'm starting with some of the meanings which are given here. Of course, the introduction part says, in the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on the life at school. So, children, effect is noun and affect, AFFECT, that becomes a verb. So, effect is noun and affect is verb. So, two districts, children, Alsace and Lorraine, now they have been captured by the Prussian soldiers. Now they are at the hands, and let us see what effect does it really have. Well, there are some meanings here coming to you. In great dread of, dread means fear, dar. Counted on, that means depended on, banked upon. उसके हिस्से में जो आता था, वो जैसे ही उस क्लास में जाता था बहुत सारा शोर होता था, तो उस शोर गुल के उसमें वो कभी लेट भी होता था तो वो छुप कर निकल जाता था. दैट इज काउंटेड ऑन. Thumbed at the edges. Now, children, when you have to turn on the page, you just put your hand there on the one of the corners of the pages and you turn it. This is the thumbing at the edges. In unison, that means in one voice. Now, when you were young kids, when you were admitted to the school there in the nursery or preparatory school, well, you must have learned this art of unison. When the teacher used to recite one poem or alphabet or prayer, well, everybody used to recite in one. That's unison. In great bustle, that means there was a lot of noise in the school, as it is always there, as it is expected. And then reproach ourselves, that means to scold, to blame ourselves for not having learned the language properly. So these are the meanings of these 6 words or the phrases that are there presented to you. Of course, you will be getting there in the course of this chapter as well. The first paragraph begins right now, children, and please be very attentive. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. I, the young student Franz, he is going to give his own story as to what happened in his own style. Of course, I is Franz here. So, first person singular, it is there. He started for school very late that morning and was in a great dread of scolding. Yes, he was late, so obviously, if you're late, you would expect the teacher would punish you or at least scold you for being late. And especially because M. Hamel had said that he would question on participles, and I did not know the first word about them. Well, there are 2 reasons why he dreaded, why he feared the scolding of the French teacher M. Hamel, because he was late for the school, and yes, he hadn't prepared the chapter on participle which the teacher was expected to hear from him. He did not know a word about that, so obviously anyone in his place would be dreading the teacher. And then he says, for a moment, I thought of running away and spending the day out of doors.
वेल थॉट केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों मैं स्कूल में क्यों जाऊं, और उसकी बजाय कि मैं आई वुड गो एंड स्पेंड माई टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, तो उसने नेचर के लैप में अपना टाइम स्पेंड करने की उसके दिमाग में आई, और टीचर की स्कोल्डिंग से भी बच सकता था वो, तो ऐसा दिमाग में उसके थॉट आया. इट वॉज सो वार्म, नाउ देर इज समथिंग विच टेम्प्ट्स, मतलब लैप ऑफ नेचर, इट वॉज सो वार्म and so bright, itni warm hai, itna brightness hai, and the birds were chirping at the edge of the woods. Birds are also chirping. Children, you will find in the later course of the chapter as to why he did not go to the school, and instead of going to the school, where did he actually spend the time? And this is one of the reasons you will find that he kept finding the nest of the birds. So here, of course, the charming, the birds chirping actually attracts him, and the weather is of course so bright at the edge of the woods and in open field back to the sawmill. अब एक एक आरा है, आरा जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटी जाती हैं ओपन फील्ड में लगा हुआ है, और उसके पीछे क्या है कि जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो अपना ड्रिलिंग कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, तो मिलिट्री ट्रेनिंग को देखने का अवसर किसी किसी को मिलता है, तो वो भी चाहता था. तो ओपन फील्ड में एक आरे की मशीन है, प्रूशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे हैं, बर्ड्स दे आर चिरपिंग, इट्स वार्म वेदर ऑल्सो ब्राइट. So all these things were very very tempting for him, and it was almost more tempting, that means enticing, attracting. But he refuses this temptation, and the rule for participle, इससे अच्छा है कि वो बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट उसका ज़्यादा था, और पार्टिसिपल का तो उसको आता भी नहीं है, इसलिए डांट मिली लगभग निश्चित थी. लेकिन बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी कि इस टेम्पटेशन को, इतना बढ़िया वेदर है, बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग है, आरे की मशीन लगी हुई है, इन सब चीज़ों को वो ओवरलुक कर देता है, इस टेम्पटेशन से दूर आता है और वो स्कूल की तरफ तेज़ी से भाग खड़ा होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट paragraph of this chapter. Of course, there are some meanings that you must catch on, children. Awe, that means dread. Awe, A-W-E. That's how you pronounce this word. Awe. That means fear. डरता है उससे. टीचर की स्कोल्डिंग से वो डर रहा था. That's it. And when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board, and for the last 2 years, all the bad news had come from there. Had come, children, it's past perfect tense. Come, came, come. That's how you can learn these verb forms. So everything is coming in second form. When I passed, it's second form, children. There was be first form is a mark. Was second form. So it's was here, second form. In front of the bulletin board, for the last 2 years, all the bad news had come from there. And what kind of news he got from there. द लॉस्ट बैटल्स, क्योंकि सब की सब जितनी भी मनहूस खबरें आती थी, अब की बार भी कुछ ना कुछ ऐसी खबर वो सोच रहे आई होगी, और उसमें क्या होता है, लॉस्ट बैटल्स, अगर युद्ध में पराजय हो गया तो वो भी उसकी न्यूज़ वहाँ पे लिख दी जाती थी. द ड्राफ्ट, द ऑर्डरिंग, द एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. नाउ दीज काइंड ऑफ न्यूज़ दैट वाज always written on the bulletin board, and now also there was a lot of crowd, there were a lot of people who were standing near and just looking at that and just getting into the knowledge as to what the news was about. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? So अब क्या बात हो सकती है, क्या न्यूज़ हो सकती है? So he remarked that, hey, of course उसको पता है कि कोई ना कोई मनहूस खबर ही आई होगी, और अब की बार क्या है कि इट्स अ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हिट द नेशनल प्राइड, दैट French language is barred. Okay, and the French people, they cannot speak their own mother tongue. So this is a hit. This is national shame, children. And this was written. So he didn't stop there because he was already late for the school. He didn't stop there. And then as I hurried by as fast as, children, as fast as, simile, it's a figure of speech. Wherever you got as or like, it is figure of speech. As I could go, and on the way the blacksmith watched her. That's the name of the blacksmith, watched her. Lohar hai wo. Okay. Who was there? Of course, watch, children, again second form.
with his apprentice. That means his with his disciple, with his employee है उसका, okay, एक शिष्य है उसका, एक fellow, or you can say apprentice, एक शिष्य उसका था. Reading the bulletin called after me, don't go so fast bub. बब मीन्स बड़ी, फेलो. आप किसी को प्यार से बब बोल देते हैं यंग फेलो को, तो उसने भी उसको बोला डोंट गो सो फास्ट बब, you will get to your school in plenty of time. There was not much time, he was already getting late for the school. But then apprentice, of course the watcher, the blacksmith, he is there with his apprentice, and he was reading that news. He has already actually read the newspaper, so he knew actually what the news was. So there was no fun, no worth, no use of going to the school since the language has already been barred. So he knew it, but friends did not know about that. So he makes a comment on that. Come on, Bub, you will get a lot of time. There is plenty of time. You will get there in the school. But then Franz did not understand that. He thought that he is making fun of him. So he didn't pay much attention to what he said. And he says, I thought he was making fun of me, and reached M. Hammel's little garden all out of breath. He kept running and running and running, panting. मिस हाँफ रहा है वो, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है स्कूल की तरफ. और जो कुछ भी वॉचटर ब्लैक स्मिथ ने बोला, जो प्रिंटर्स के साथ वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा हुआ था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वो हाँफता हुआ अपने स्कूल की तरफ भागा जा रहा है. एंड देन he reaches the school eventually, and what he finds, children, this paragraph gives you a comparison between what used to happen during the normal days and what's happening today. Usually when school began, children, it is second form, begin, began, begun. That's how, if you are not aware of some of the verb forms, you can enrich yourself with these. So plenty of opportunities, children, during this course of the chapter that I am going to do, and many more chapters will come to you. Well, if you're willing, the whole language can come to you. That's the easiest way of enhancing your language, your pronunciation, word meaning, everything. Not only you will get words, not only meanings, not only Hindi and English, not only pronunciation, correct spellings, verb form, everything you can do it. And above all, well, listen to me with some kind of attention. You'll have to speak the words that I speak. So that will help you in pronouncing the words as proper as it possibly can be. So there was a great bustle which could be heard out in the street, an opening and closing of desks. Now, दिस इज चिल्ड्रन व्हाट यूज टू हैपन नॉर्मली. अक्सर जब वो स्कूल जाता था तो ये सीन उसको दिखाई देता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क का बंद होना, खुले होना, उसको खोला जाता था तो उसकी आवाज़ तो आएगी. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, द वर्ड विच यू गॉट अर्लियर ऑन, इन वन टोन, यूनिसन, वेरी लाउड एंड विद द हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड. कभी कभी तो बच्चों हाथ उसके ऐसे रखने पड़ते थे कि किसी भी इतना लेसन इतना तेज़ी से पढ़ाया जाता था, इतनी आवाज़ होती थी कि बच्चों को कई बार तो अपने हाथ कान पे रखने पड़ते थे. कभी कभी क्या होता है बच्चों, मोबाइल आप यूज़ करते हैं और बहुत आवाज़ आती है, आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं या फिर किसी रोड पे जा रहे हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है. तो उसकी क्लैरिटी को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी आपको फ़ोन को ऊपर हाथ रखना पड़ता है इस प्रकार से. ऐसे ही वो भी कह रहा है कि क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीटेड वेरी लाउड and with the hands over ears to understand better. Better, children, go, it is second degree. Yes, good, better, best. So this is how you are going to have enhancement in the degrees as well. And the teacher's great ruler. Great can be mahan in one word, but ruler cannot be mahan, bahut bada. Children, here great ruler rapping on the table. This is rapping. Okay, striking sharply, मतलब उसको तेज़ी से उसके पास रूलर था, स्केल था, उसको टेबल के ऊपर मार रहा है. ये अक्सर सुना जा सकता था, आज नहीं, ये अक्सर होता था. एंड नाउ चिल्ड्रन, ग्रेट रूलर, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच हियर. ट्रांसफर्ड एपिथेट, चिल्ड्रन, ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड एपिथेट, EPITHET. Now, what is transferred epithet? I'll tell you. Children, here it is used great ruler. Now, ruler cannot be great. Great can be the person who has got that ruler.
Now, whether that ruler, the scale, or the stick is used in positive sense or in negative sense, you also mark your lines with the ruler. You cannot say it's a horrible ruler. Okay, it is very useful. But if that scale is used for the purpose of beating somebody, or just having his own go, striking somebody, then it can be a horrible ruler. So great ruler is not great, it's the person who actually holds it that is great. So transferred epithet, an adjective which is not directly associated with the noun that it comes, but behind who the person who uses, this is transferred epithet, children. um, but now it was all so still, and I had counted on the commotion. This is, children, I had counted on. The word that you got in the index, counted, means depended on, banked on, निर्भर रहना. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन. कमोशन शोरगुल होता है. अक्सर आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे ये कमोशन देख सकते हो जहाँ पे काफ़ी शोरगुल होता है, उसको कमोशन बोला जाता है. टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब अक्सर क्या होता था, बहुत शोरगुल होता था, बहुत शोर शराबा होता था. तो अगर वो कभी लेट हो भी जाता था तो उस शोरगुल में वो बिना नोटिस किए, बिना वो टीचर उसको नोटिस नहीं कर पाता था. कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, आपके स्कूल में फंक्शन है, ओके, उस फंक्शन में क्या होता है, ऑलमोस्ट एवरी टीचर इज़ बिजी इन हैंडलिंग द अफेयर्स, इन मेकिंग दोज अरेंजमेंट्स. तो उस फंक्शन में क्या है कि टीचर्स बिजी रहते हैं. तो उन 10-15 दिन में जब ये फंक्शन की तैयारी चलती है तो उसमें बहुत सीरियस काम नहीं होता. कभी आप लेट आ रहे हैं, सवेर आ रहे हैं, या स्कूल क्लास से बाहर हैं, अंदर हैं, तो वो चीज़ें कम नोटिस की जाती हैं. ऐसे ही आपके घर में कोई मैरिज है, शादी है, या कोई रिसेप्शन है, कोई बड़ा फंक्शन है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिज़ी रहते हैं अरेंजमेंट करने में, गेस्ट को अटेंड करने में. तो उस दिन आप थोड़े बहुत लेथार्जिक हो जाते हो, केयरलेस हो जाते हो, और कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो शायद पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाते. तो here the same approach here. He says, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. And of course, that day everything had to be quiet, quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन बिल्कुल सब कुछ अलग है. कोई शोरगुल नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई हसल बसल नहीं है. उस दिन तो बिल्कुल चुपचाप, as quiet as, children, similarly wherever you got as or like, you got a direct comparison between. So it is Sunday morning. Sunday को स्कूलिंग नहीं होती है, कॉलेज नहीं होते हैं, उस दिन तो शांति रहती है. तो उस दिन इतनी शांति थी जैसे कि संडे को शांति होती है. बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, क्वाइट, QUIT, चिल्ड्रन, चुपचाप. एंड QUITE, दैट मीन्स बिल्कुल, क्वाइट फाइन, बहुत अच्छा जिसको बोलते हो. That is the meaning of. So this is how you should be preparing. Quiet, QUIT, that means shanti, and QUITE, that means bilkul. This is quiet and quiet as Sunday morning. And through the window I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with this terrible iron ruler. Again, children, earlier it was great ruler, now it is terrible iron ruler. Again, it is transferred epithet. Ruler can never be terrible. It is the teacher who holds that, or a person who holds that is actually terrible. And he saw him just moving from one place to another, up and down. And I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed, means बहुत लज्जा आ रही थी, and how frightened, उस दिन बहुत भयभीत भी था वो, बहुत लज्जा उसको आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, बहुत शांति है, कोई शोरगुल नहीं हो रहा. पहले वो शोरगुल में चला जाता था, लेकिन आज वो उस शोरगुल में नहीं है, वो शांति है, और बहुत डरा हुआ था. तो ब्लश्ड मीन्स बहुत लज्जा आ रही थी उसको, एंड ही वॉज वेरी मच फ्राइटन, बहुत डरा हुआ भी था. So very important paragraph, children. This one is so many meanings are there, and the question which can be raised here is, what was the difference in ordinary days, usual days, and today? Of course, there was a lot of great and lot of hustle and bustle, great commotion, and he counted on that commotion even he was late, But today it was as quiet as Sunday morning. He was blushed, he was frightened already. So that question could be asked from this particular paragraph. But nothing happened. जैसा उसने सोचा था कि आज डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, डांट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ.
M. Hamel saw. Children again see, saw, seen. It's all second form coming to you. Second form, children. And he said very kindly, go to your place quickly, little friends. We were beginning without you. Little friends, go to your place. We were beginning without you. हम तुम्हारे बिना बिल्कुल शुरू करने वाले थे. आप अपनी जगह पे जाइए. तो जैसा उसने सोचा था कि आज तो काफ़ी डांट मिलने वाली है, काफ़ी फटकार मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. और टीचर ने कह दिया कि हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, आप जाइए अपनी सीट पर बैठ जाइए. और जैसे ही उसको बोला गया, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. अब क्योंकि उसको कहा कि आप जाइए बैठ जाइए, वो भागता भागता गया और उसने जाके लगभग उस पर जम करके वो बैठ गया. क्योंकि उसको डांट मिलने वाली थी, वो नहीं मिली, वो एक्सपेक्टेड था, तो अब उसको खुशी मिली, वो जंप. नॉट टिल देन, और जब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और थोड़ी देर के बाद जो फ्राइट का मतलब डर, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. नाउ चिल्ड्रन, थ्री थिंग्स ही विल नोटिस. फर्स्ट इज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, his frilled shirt, and the little black silk cap. Children, three things: beautiful green coat, his frilled shirt, and little black silk cap. रेशमी पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी वो. ये तीनों के तीनों वो डाल रखी थी उसने. All embroidered that he never wore except on inspection and prize days. तो ये जो आज अटायर डाला हुआ है, जो उसने ड्रेस डाली हुई है, ये अक्सर या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज में डाला जाता था, या फिर वो फंक्शन वाले दिन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज या फिर इंस्पेक्शन डेज, इन दो ओकेजन पे ही वो डालता था. आज क्यों डाली हुई अभी तक तो उसको समझ में नहीं आया. देखो. एंड सेकेंड पॉइंट, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम. इसके अलावा, बिसाइड्स चिल्ड्रन, इसके अलावा, इन एडिशन टू, देयर इज वन बिसाइड, BESID. बिसाइड मीन्स साइड में, एंड बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू. दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज. दीज आर homophones, children. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn is serious. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो चीज़ थी वो क्या थी? अक्सर जो पीछे वाले जो बेंचेस थे वो खाली रहते थे, लेकिन आज वो खाली नहीं है. ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली उसको चीज़ लगी. एंड द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves. ourselves मीन स्टूडेंट. जो गाँव के जो लोग हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह वहाँ पे बैठे हैं. एंड ओल्ड हॉजर, नाउ यू कैन सी सम ऑफ द ओल्डर पीपल. ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. एक ओल्ड हॉजर इज द नेम ऑफ द पर्सन, और तीन कॉर्नर्स की एक हैट वो डाल रखी है. फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग और भी वहाँ पे आए हुए हैं. एवरीबडी लुक्ड सैड. सब के सब बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान लग रहे हैं, सैड हैं. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. एक पुराना कायदा, एलिमेंट्री स्कूल बुक होती है जो कि छोटे बच्चों को दी जाती है, जिसको कायदा बोला जाता है. तो वो कायदा लेके आया हुआ है, विच वॉज थम्ड एट द एजेस. चिल्ड्रन, पेज बुक होती है, बुक को आप ऐसे ही, बुक है उसके ऊपर थंब लगा के उसको आप टर्न करते हो. तो दिस वाज थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with great spectacles lying across the pages. Again, great spectacle, children, it is transferred epithet. So वो ओल्ड होजर जो एक हैट लेके आया हुआ है, हैट तो उसने डाल रखी है, और एक कायदा उसके पास है जो कि एजेस पे कुछ काला पड़ गया था, और उसने अपनी नीज पे, अपने घुटनों पर वो रखे हुए, और बहुत बड़े स्पेक्टिकल्स हैं जो भी पेजेस के ऊपर पड़े हुए हैं. तो ये सिनेरियो है, और इतने सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं जो पहले कभी नहीं आए थे, खाली रहता था. तो ये जो लोगों का वहाँ पे आना, ये सबसे बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, चिल्ड्रन. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन, चिल्ड्रन, इन 2020 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. इसी पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन आया था जो कि 2020 में आया था. ओके, 21 में तो एग्ज़ाम्स हुए नहीं. एंड द क्वेश्चन वाज, व्हाट सरप्राइज फ्रेंड्स व्हेन ही एंटर्ड एम हैमेल्स क्लास on the day of the last lesson. That question, children, what surprised friends when he entered M. Hammel's class on the day of the last lesson?
This was the question which was worth 6 marks at that time. uh, Now you will not be getting any question of 6 marks. Of course you will be getting all MCQs, but then that was the question which, and all the points which I've just shared with you, they are in that particular answer. While I was wondering about it, वो सारा का सारा सोच रहा था भाई ये सारे के सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं, इतनी शांति क्यों है, ये एम हेमल जो है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप सब एम्ब्रॉयडरी करके ये क्यों डाल के आया हुआ है, और संडे जैसी शांति लग रही है, इसके बारे में सोच ही रहा था वो. और एम हेमल माउंटेड, दैट मीन्स ही सैट ऑन हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव. ग्रेव मीन्स सीरियस. अब ग्रेव के मीनिंग चिल्ड्रन, एक तो सीरियस होता है, दूसरा ग्रेव यार्ड में होता है, शमशान घाट में जो कब्रें होती है उसको ग्रेव बोला जाता है. बट हेयर ग्रेव मीन्स सीरियस, उसी सीरियस टोन में. एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, जैसे उसने कहा था कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले उसको बोला था, उसी सीरियस मैनर में उसने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन. चिल्ड्रन दिस इज द चैप्टर वी आर डूइंग, लास्ट लेसन. Okay, so he said, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Children, these two cities, Alsace and Lorraine, of course they are in the city of Alsace now where the teacher is there. Of course he's teaching, he's giving his last lesson. France is also there. This is the city, but two cities have already been captured, Alsace and Lorraine. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नया टीचर है वो कल आने वाला है मेरी जगह. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव. और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने. नाउ द चिल्ड्रन, द रीज़न फॉर द अनयूजुअल हैपनिंग्स, ये जो अनयूजुअल हैपनिंग्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीरियसनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द संडे मॉर्निंग्स, देन गोइंग इन टू द ड्रेसेस दैट इज़ वियरिंग, so strange serious silence over there, the big people there, the retired people, older people occupying the back benches, ये सब हैपनिंग्स हैं, इसके बारे में सोच ही रहा था. अब जब उसने अनाउंस कर दिया कि आज मैं आखिरी बार आपके सामने हूँ, आखिरी ऑफिशियल लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, अब उसको समझ में आया कि व्हाट वाज द ऑल अनाउंस, व्हाट वाज एक्चुअली रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड सेल्फ. अब उसकी बात में सारी समझ में आ गया. एंड व्हाट ही सेज, what a thunderclap these words were. अब thunderclap is something that hits you on your head like a hammer. कोई हथौड़े से आपके सिर पे मार देता है तो thunderclap, बिजली सी जैसे गिरती है ना, बिजली की. startling, surprising, stunned, हक्का बक्का रह गया जिसको कि ये वर्ड्स हुई, ये जो वर्ड्स थे उससे वो हक्का बक्का रह गया. और चिल्ड्रन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि व्हाट वर द वर्ड्स that actually shocked and surprised friends. ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, which were the word that actually shocked and surprised friends. And these were the words that this is my last lesson, that German in the schools of Alsace and Lorraine will be taught and French has been abandoned. Oh these wretches, wretched means दुष्ट, base people, silly, मतलब एक प्रकार की गाली होती है, उसको गाली दे रहा है जर्मन्स को कि अच्छा. बेस मीन्स घटिया. ये घटिया लोगों ने ये सब उस बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था. दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल. यही सब कुछ है जो उसने टाउन हॉल पर उन लोगों ने लिखा हुआ था. अब उसकी बात समझ में आ रही है. चिल्ड्रन, टुडेज लेक्चर, दैट इज पार्ट 2. lecture number 1, I told you the story about that, the details about what I'm going to say. And today's lecture, it was last lesson. I started with the first paragraph. I started for school very late that morning. This is the very first paragraph where I began, and then I ended up there. Of course, the page number, I can tell you children, it's page number 2. I started for school very late. This is where I started. And page number 4, oh the wretches, that was what they had actually put up at the town hall. This is where I finished. So this particular episode, part 2 of this lecture, ends today. The next lecture when I begin, that will start from my last French lesson, why, that is page number 4. This is where I will start from next lecture. जो आज मैंने जो लेक्चर दिया वो पेज नंबर
दो, पेज नंबर 2, लास्ट लेसन जो कि है पहला पैराग्राफ जो है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यहाँ से मैंने आज शुरू किया था। और पेज नंबर 4 जहाँ पे ये पैराग्राफ है, द रेचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये पैराग्राफ है जो मैंने आज समाप्त किया है। अगला लेक्चर जब मैं लूँगा तो मैं स्टार्ट करूँगा पेज नंबर 4, दैट इज़ माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, यहाँ से मैं अपना अगला लेक्चर शुरू करूँगा। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने ही चैप्टर को, इतने इतने पार्ट को सुनिए, और फिर मैं जब आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सजेशंस लूँगा, आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज ऑल्सो साइड बाय साइड। टिल देन हैव अ गुड टाइम।